Hi, everyone. Good evening, good afternoon, in fact, I would say to everyone. Welcome to the third YouTube live of MSFL. And एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज मैं कहूंगा कि लास्ट दो सेशन में हमने जो किया आप सभी लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा, right? So welcome everyone again. I would say that this YouTube live now today. Uh, for today on this YouTube live again we have the topic for today is the triggers going ahead for the next quarter. So which are the triggers for the next quarter, I would say. That is the topic for today. In the last two YouTube live sessions, what we had was what is a weekly or monthly road ahead for the markets, and उसमें हमने एक चीज देखा कि मैं पहले जब YouTube लाइव सेशन किया था तब 13,100 200 के आसपास था निफ्टी. मैंने कहा था जब तक 13 के नीचे बंद नहीं होगा तब तक हमें बुलिश रहना है. जब तक 29,000 के नीचे बैंक निफ्टी नहीं बंद होगा, दैट इज 29,000 के नीचे, टिल वी डोंट गेट अ क्लोज, the overall short-term trend would remain positive, and that continued, and that happened so as anticipated. So I'm happy that I'm sure that all of you must have definitely made money out of it, and now from those levels we are very close to 13,700. So almost like 500-700 पॉइंट वहां से हमें एक मूव देखने मिला है निफ्टी में. एंड सिमिलरली फ्रॉम बैंक निफ्टी वी सॉ फ्रॉम 29,000 to now it's very very close to 31,000. So 2,000 points there, nearly around 500 to 700 points on Nifty. So I'm very sure that the viewers have really gained, and I'm happy for that. And I'm happy that all the MSFL clients, Marwari shares के clients को definitely हमारे research के calls जो continuously मिलते जा रहे हैं, that's been working quite well as well. And now let me start, with today's topic. And today's topic is what are the triggers for the next quarter. ये हमारा टॉपिक है for today. And उसके लिए मैं कहूँगा we have many options today, fundamental, technical, derivatives सभी बोलूँगा, but I'm starting now first with the global factors, friends. Okay, so definitely एक चीज तो बहुत ही important है आगे जाके जो एक triggers helpful होने वाले. First trigger is definitely going to be the support from the central bank and the what is going to be the fiscal and the monetary policy going forward. Now next quarter की जब मैं बात कर रहा हूँ, next quarter में मैं very sure which are the triggers. First thing is definitely budget आने वाला है, Indian budget, union budget. So that is going to be very important in the next quarter. What budget में क्या fiscal policies आती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो important रहेगा. प्री बजट रैली क्या और हमें कंटिन्यू होते हुए देखने मिल सकती है. जनरली वी हैव सीन पास्ट प्री बजट रैलीज, राइट. पहले दो बजट होते थे, अब एक ही बजट होता है. सो रेल एंड फाइनेंशियल बजट बोथ आर मिक्स नाउ. सो कहने का मतलब यही है कि क्या प्री बजट रैली अभी भी कंटिन्यू रहेगी, बिकॉज ऑलरेडी रैली हमें ऑलरेडी इतनी देखने मिल चुकी है. अभी भी मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई का सपोर्ट रहेगा. दीज आर दी फ्यू फैक्टर्स जो हमें देखना है. I think, see, the way US markets are also pumping in money, the way the central bankers across the globe are giving good support liquidity-wise to the financial markets, and अभी तो stimulus की बातें चल रही है US में. So I think that the monetary policy is definitely be favoring the equity markets now. They have favored in the past in this COVID session, and post that also, once the vaccination happens, that post that also it will be happening, because that support is very much required on the ground ground level as well to come out of this situation. So I think वो होगा ही continue. I mean, so monetary policy and fiscal policy both are going to be definitely very supportive, and I think that is going to be one of the major trigger in India, right? And globally also, if you see that central bankers across the globe are working on this kind of stimulus packages, providing that much of support. So does it mean that correction नहीं आ सकता? Correction आ सकता है, but then that correction will not be big as that which we have seen in March. वैसा नहीं होगा. जब भी आएगा there will be a lot of support at the lower end. ज़्यादा sustain नहीं होगा, and हर एक डिप में हमें एक बाइंग इंटरेस्ट देखने मिलेगा. ऑल्दो कंसोलिडेशन फेज हमें देखने मिल सकता है गोइंग फॉरवर्ड, बट नॉट अ बिग करेक्शन. दैट आई एम वेरी मच श्योर अबाउट इट. नेक्स्ट ट्रिगर तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन आया है, जीडीपी ग्रोथ के हो गया. तो जीडीपी ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज अगर वैक्सीनेशन होने के बाद क्या प्रोजेक्शंस आते हैं, दैट इज बिकॉज वी हैव सीन सम रिवाइवल. वी हैव सीन नेगेटिव से पॉजिटिव तो हम क्विकली आ गए, राइट. नेगेटिव से पॉजिटिव जीडीपी आने के बाद, इतना अच्छा जीडीपी नंबर्स लास्ट टाइम आने के बाद, अभी हमें देखने का हाउ क्लोज वी आर गेटिंग टू दोस 9 10 मे बी हायर देन दैट जीडीपी ग्रोथ अगर हमें देखने मिलता है क्या.
post vaccination. That is going to be very important, and post the budget. Unemployment rate, bankruptcies, both personal and business, personal and business, ये सब हमने इसमें देखा है. काफी तकलीफ हुई है, because of the COVID, and although there was a lot of support provided by the RBI and the government, but despite that, many people have, अगर आप देखें तो demand जो important है, demand is very much important if you want that growth, and to get back that demand, the purchasing power, should come back, and to that, for that, the continuous support from the government and the central bankers will be required at least for some more few quarters, till there is, on the ground reality, you are not seeing that, now everything is now smoothly working. Till date, we are seeing that, many of the industries working on the 50% capacity. There are still cases which are not declining that, drastically. So cases are still coming up. Although one best part is that, the recovery rate is awesome as far as India is concerned, and that is helping out. But ये जो मैं आपको सेक्टर्स फंडामेंटली बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है. सेक्टर्स दैट आर वल्नरेबल टू कोविड, वो जब तक ठीक नहीं होते, यू सी ट्रैवल इंडस्ट्री, टूरिज्म एंड ट्रैवलिज्म, होटल इंडस्ट्री, I mean, you see aviation industry, you see, transportation, ये सब जब तक बराबर नहीं होता है, and because of which, there are many other textile industry, that is also affected a lot because of the COVID, right? So ये सारी industry में रिवाइव बाकी है. Those industries which have done really good are FMCG, pharma, IT, banks में हमें bounce back देखने मिला. Banks have still not made those lifetime highs, but then support from the other sectors are helping bank, right? So banking and financials में नहीं इतना मिला है हमें इतना. FMCG has seen a good move, but we have not seen from the travel and tourism, we have not seen from the hotel industry. So ये consumption वहां से आता है, स्टेट रेवेन्यूज वहां से आते हैं, ग्लोबल रेवेन्यूज वहां पे कितना बड़ा इंपॉर्टेंट है, एविएशन इंडस्ट्री. तो ये जब तक, आई डोंट थिंक ये यहाँ पे जब तक रिवाइवल आएगा तब तक हम कहेंगे कि अभी और ग्रोथ देखने मिले. सो आई थिंक पोस्ट वैक्सीनेशन और ग्रोथ यहाँ से आएगा, और ये यहाँ से ग्रोथ जो आएगा, दैट विल अगेन बूस्ट द इकोनॉमी. And that is what has been factored in, I think, in the price right now, because market is always ahead, right? So maybe, these stocks have right now not performed, and they will perform going forward. Maybe, malls, theaters, prices, stock prices have bounced back, but they can still do much better from here on as well, right? And I am sure that, post vaccination, मैं कहते आया हूँ एक चीज कि animal spirit is going to come back into the markets, because the thing is that people have not worked, many of people have lost jobs, many businesses have shut down. They all want to come back now. Everyone wants to come back and do and perform. Anyone would like to perform, right? If someone is, just because of the natural thing and, epidemic or pandemic, someone is like, had to actually sit at home and not work. But now if things get better or improve from here on, post-COVID, I'm sure that all of us, in fact, who have been sitting at home, working, and those who have lost a job, who businesses have shut down, they're going to come back hard. Right, and that is what I say, that the animal spirit is going to come back. So if you think from the long-term point of view, any dip should be utilized as a buying opportunity. इसीलिए आप आगे का देखो ना, नेक्स्ट 4-5 साल के लिए तो बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ आने वाला है. That is what I feel. The new wave or the new move that has started from 7,500 on Nifty, 25-26,000 on Sensex, जो नया तेजी स्टार्ट हुआ है, तेजी एक शॉर्ट टर्म नहीं है, एक नीज रिएक्शन, प्रॉफिट बुकिंग तो हमेशा देखने मिलता है, वो देखने मिलेगा. बट 2008 के 2020 मार्च वैसा सीन अभी नहीं दिख रहा है. तो जो अगर कोई सोचता रहेगा कि बबल है, ये मुझे नहीं लगता कि बबल ऐसा अपना क्रिएट हुआ है. बबल जो होना था वो ब्रेक होके बॉटम हो चुका है. अब तो आगे का अगर आप सोचो तो देयर इज गोइंग टू बी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज एवरीवेयर, एंड पीपल हैव नाउ अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी. तो काफी सारे बिजनेस में काफी अलग अलग रिवाइवल आने वाले हैं. That is what I think. As far as US-China trade war and other things are concerned, I think US-China trade war तो अभी subside हो जाएगा. मतलब just because of the new elect president Joe Biden, I don't think कि वो चीज और impact करेगा markets को. That is going to be something good. आत्मनिर्भर भारत का काफी अच्छा हो जाएगा, because I think many industries are going to actually flourish from here on. Make in India ये अच्छा होगा, एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी काफी इंडिया में आएंगे. सो आई थिंक दीज आर द ग्लोबल फैक्टर्स व्हिच आर रियली गोइंग टू हेल्प. ओके, एक इंपॉर्टेंट डेटा आप लोग के साथ में शेयर करता हूँ इंडेक्स वैल्यूएशन के हिसाब से. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, डू नॉट मिस दिस आउट. व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू राइट नाउ. ओके, आई एम गोइंग टू कंपेयर द पी रेशियो कंपेयर करना बहुत जरूरी है. अभी आपको अगर मैं कल तक का पी रेशियो निफ्टी का बताऊं तो आप जान लीजिए क्या है. 37.31 पी रेशियो है जो निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है.
ये जो नया हाई लगा है, कोविड जो स्ट्राइक हुआ इंडिया में कि वर्ल्ड वाइड, उसके पहले जो पी रेशियो पे निफ्टी चल रहा था 12,400 के टाइम पे आसपास, द पी रेशियो वाज 28.56, वो 28.56 से अभी 37.31 है। वी ऑलरेडी सीन अ चेंज, रेट ऑफ चेंज है 30% का। सो हम लोग ने पोस्ट कोविड भी कि पोस्ट वैक्सीनेशन भी काफी चीजें, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि मार्केट फैक्टर इन कर रहा है, हेंस वी आर सीइंग दिस जंप इन पी। अदरवाइज इतना पी हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे, सो मुझे नहीं लगता कि हिस्टोरिकली पी इतना आपको जबरदस्त पहले कभी पास में देखने मिला होगा। अगर मैं आपको बताऊं कि आप अगर हिस्टोरिकल पी की अगर मुझे बात पूछे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि पहले जब जब हमने ऐसे मार्केट में जब देखा है पी का, सो इतना हाई पी 37 के पी पे निफ्टी कभी इतना हाई पे देखा नहीं। 30, 31, 32, 33 के आसपास आता है। वी सी दैट प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में देखने मिलता है हमें, राइट। बट देन व्हाट आई थिंक इज दैट अभी जो हिसाब से निफ्टी एक लेवल पे चल रहा है, वैल्यूएशन वाइज तो काफी कुछ फैक्टर इन हो चुका है। सो राइट नाउ द पी रेशियो ऑफ निफ्टी इज 37.31, हेंस कॉशियसली बुलिश रहना इज व्हाट आई वुड बी टेलिंग यू ऑल। अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक ने अंडर परफॉर्म किया, जो मैं बहुत बता रहा था आपको। देखो, ये जो कोविड स्ट्राइक हुआ उसके पहले जो मैंने बताया कि 28.5 का पी था निफ्टी का, बैंक निफ्टी का 36 का पी था, 36 का पी था। एंड नाउ राइट नाउ द बैंक निफ्टी पी इज समवेयर अराउंड 29.5। तो अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी में तो अभी भी आई मीन डी ग्रोथ हुआ है। अगर आप देखो तो, अगर आप ये फाइनेंशियल ईयर में देखो या ईयर ऑन ईयर देखो, कैलेंडर ईयर, सो ये साल में लगभग 17.5-18% का हमें देखने मिल रहा है कि कट है, right? Which other sectors have gained? So it is Nifty FMCG which has gained. Nifty FMCG has clearly gained 43.5 का पी पे भी FMCG चल रहा है, जो पहले मैं कहूंगा जैन फेब के आसपास 38 के आसपास था, 38.5 के आसपास था। निफ्टी ऑटो में भी हमें एक अच्छा हिसाबा देखने मिल रहा है। सो ऑटो, एफएमसीजी, बैंक, ये सब ने अच्छा है, मैं कहूंगा कि एक्सपांशन हमें देखने मिला है। निफ्टी बैंक में थोड़ा बहुत एक्सपांशन और जगह बाकी है, बट आई थिंक दैट कैन टेक सम मोर टाइम, उस फाइनेंशियल आई। तो ये सारी चीजें फंडामेंटली मैं आपको बता रहा था कि एक पी रेशो से एक ये चीज समझ में आ रही है कि हमें तेजी क्यों देखने मिली। आईटी एक्सपेंशन आईटी में देखने मिला, थोड़ा बहुत ऑटो में देखने मिला। ऑटो आईटी ऑटो हैज कम बैक 2018 से, मैं तो कोविड के काफी पहले से ऑटो में एक एक बेयर मार्केट चल रहा था। फार्मा में काफी समय से बेयर मार्केट चल रहा था। वो सारे सेक्टर्स अब नए फ्रेश बुल मार्केट स्टार्ट किया ऐसा लग रहा है। आईटी वाज ऑलरेडी देयर, एफएमसीजी वाज ऑलरेडी देयर, so they have not been hit a lot by COVID, but then they're bouncing back. Importantly, index, broader index बहुत अच्छा है निफ्टी मिड कैप एंड स्मॉल कैप का। सो अब मैं वो बात करूंगा टेक्निकल्स और डेरिवेटिव्स की। नाउ मूविंग फ्रॉम फंडामेंटल्स टू टेक्निकल्स एंड डेरिवेटिव्स। अब ये लेवल से क्या, स्टिल आई वुड से दैट कंटिन्यू विद द ट्रेंड, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, हम वही कहते आ रहे लास्ट 2 सेशन से। और अब आपका जो नीचे की तरफ आपको जो लेवल पे ध्यान होना चाहिए निफ्टी पे, वो है 13,400। 13,400 के नीचे जब तक निफ्टी क्लोज नहीं करता तब तक शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है। ऊपर में 13,700 के ऊपर बंद आता है तो नेक्स्ट लेवल विच कम्स टू टेक्निकली विच कम्स टू माय माइंड इज 13,850, 13,900। 13,400 इंपॉर्टेंट है। वैसे ही बैंक निफ्टी में नीचे में कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, सो अगर मैं आपको बता दूं बैंक निफ्टी में नीचे में एज ऑफ का बैंक निफ्टी 30,700 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ऊपर में 31,000 है। बहुत क्लियर है, आई मीन ये बहुत ही एविडेंट है फ्रॉम डेरिवेटिव पॉइंट ऑफ व्यू भी। अगर आप देखें तो 31,000 के स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। सो दैट इज द लेवल व्हिच बैंक निफ्टी रियली नीड्स टू टेक ऑफ इन द शॉर्ट टर्म। अगर वो 31,000 निकालता है, मुझे लगता है नेक्स्ट 1,000 पॉइंट की रैली आ जाएगी। 31,000 से 32,000 तक का मूव हमें बैंक निफ्टी में देखने मिल जाएगा। Failing to surpass 31,000, there can be some consolidation between 31,000 to 30,000। और अगर 30,000 ब्रेक हुआ, राइट, तो आप ये मान लेना 30,200 स्पेसिफिकली आपको मैं बताता हूँ, 30,000 भी नहीं, 30,200 के लेवल अगर ब्रेक हो गए तो वहां से लगभग आपको 800 से 1000 पॉइंट का बैंक निफ्टी में करेक्शन देखने मिलेगा। तो आपका लास्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो बैंक निफ्टी में होना चाहिए लॉन्ग साइड को 30,200 का आना चाहिए। उसके नीचे बंद आया, एग्जिट कंप्लीटली फ्रॉम द बैंकिंग स्टॉक्स। भले ही बाद में उसके ऊपर बाद में जाता है तो हम वापस 31,000 के ऊपर वापस लॉन्ग कर सकते हैं, बट फ्रॉम द डेरिवेटिव एंड टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू में बताऊंगा 30,200 आपका एक इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक वो ब्रेक नहीं करता, होल्ड करिए, ब्रेक करता है डेफिनेटली एग्जिट करिए। आपको फ्रेश लॉन्ग अगर बैंक निफ्टी में बनाना है 31,000 के ऊपर ही बनाना। 31,000 निकलता है उसके ऊपर अवर्ली क्लोज में मिल जाता है आपको। कल एक्सपायरी भी है एफएनओ की, तो आपको मैं एफएनओ एक्सपायरी के पहले ही आपको ये बता रहा हूँ कि 31,000 के ऊपर ही बाय करना है बैंक निफ्टी को। If it surpasses those levels, definitely buy. You will see next 800 to 1,000 points move. Nifty 13,700 to tomorrow is the expiry. You buy 13,700 के ऊपर ही next weekly expiry options or whatever.
Futures तो obviously Sensex के ये weekly, so I would not talk about Nifty के weekly or futures के, but options तो if you want to buy next week you do. But 13,700 is going to be important level on the upside for Nifty, and for Bank Nifty it is 31,000. Lower side Nifty has a superb support at 13,400. That should be your trailing stop loss. Likewise Bank Nifty में 30,200 should be your support. So I'm sure that मैंने आपको बता दिया कि what are going to be the triggers for next quarters. आप ये सारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे ध्यान रखना. इंडिया में the most important thing is that definitely IIP, GDP, इन्फ्लेशन फिगर्स हमें देखना है, बट मॉनेटरी पॉलिसी आगे गोइंग फॉरवर्ड एंड फिस्कल पॉलिसी नेक्स्ट क्वार्टर की बात अगर मैं करूं, सो नंबर्स तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है ही कंपनी में, राइट. वो तो आएंगे, तो एवरी क्वार्टर आते हैं. मैं तो नहीं कहूंगा कि नेक्स्ट क्वार्टरली नंबर्स इंपॉर्टेंट है, हर क्वार्टरली नंबर्स इंपॉर्टेंट ही होते हैं, बट ट्रिगर्स जो है मेन मार्केट के लिए, दैट इज गोइंग टू बी द बजट, राइट. एंड बजट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वार्टर, राइट. लाइकवाइज नेक्स्ट क्वार्टर में न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूएस is what steps is he going to take, what अभी पैकेज तो आ जाएगा, मे बी फेड की तरफ से आज मीटिंग है एंड ऑल, सो दैट इज गोइंग टू बी गुड. आई थिंक what other fiscal measures is the next president of US also going to take. That is, these are the two important things I would say in the next quarter. ये बहुत ही important रहने वाला है. And then definitely we will be looking at the macro numbers. So this is all from my side as far as today's YouTube session is concerned. Thank you so much, friends, and definitely we'll meet up next session. And next session we will discuss about more sectors and if possible stocks, but definitely I'll be talking more about sectors. कौन से sectors में one should be investing in the short term, medium term, and long term, and everything. That is all from my side. Thank you all so much.